1st February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Moneycontrol. Log on to www.moneycontrol.com for more. Good afternoon and welcome to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, Yatin, bears are back with a bang and I'm wearing that favorite color of mine as well. Weak global macro cues largely to blame as the Sensex and Nifty closed in the red today. The Nifty still managing to hold about the psychological 18,000 mark, which would be some kind of consolation victory for the bulls, I would say, Yatin. Barring IT and PSU banks, most other sectors closed in the red. Very lackluster session there. Yeah. And among the in the volatility index, there was a drop of close to about 2.7%. It's now fallen below the 14 mark. Usually, whenever there is a decline, the volatility index tends to go up. But you're seeing an interesting trend out here, where the volatility index has actually fallen, even though there's been a decline in the market. Coal India, ONGC, UPL and Tata Steel were among the major gainers today, whereas Adani Enterprises, Tata Motors, Kotak Bank and Asian Paints, these were among the laggards. Absolutely. सैंटो ने कहा कि उनके शर्ट का रंग लाल है, मेरे शर्ट का रंग ब्लू है, मेरे पीछे जो बुल है वो भी ब्लू है, लेकिन बाजार का निशान जो था आज लाल था. ऑब्वियसली कोई बड़ा कट नहीं आया. ऑब्वियसली आज अगर हम देखें तो जो वीकली एक्सपायरी थी वो लैक लस्टर थी. कोई बड़ी एक्टिविटी वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखाई पड़े. ऑब्वियसली आज अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ की प्राइस बैंड के अनाउंसमेंट के बाद नीचे था. काफ़ी सारे इंडेक्स स्टॉक्स नीचे थे. एशियन पेंट्स रिजल्ट्स के बाद एक नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ दिखाई पड़ा. तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज बाजार में रहा सैंटो. और अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स की बात करें तो वो इसीलिए गिरा होगा शायद क्योंकि आज एक एक्सपायरी का इफेक्ट भी उसके अंदर अटैच्ड होगा. लेकिन ब्रॉडली काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था. रिजल्ट सीजन अपने पीक पे शुरू हो चुकी है. तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अर्निंग्स के बारे में चर्चा करेंगे शो में और ये देखेंगे कि कैसे आगे जाते हुए इस स्टॉक्स या इस सेक्टर में आपको रणनीति बनानी है. Well, and we begin with Polycab, a strong set of numbers from the company there, and the market reacted positively to it as well. A steep spike in the stock price in a lackluster trading session today. So Polycab reporting an increase of 45% in its net profit to about 358 crore. Revenue was up 10.2% at 3,715 crore. Both operating margins and operating profit as well showed a steep jump. Operating profit up by close to 40% and EBITDA margins came in at 13.6% versus 10.7% last year. Its wires and cables business revenues there also showed a good jump, up 11.4% at 3,342 crore, which was what the market was looking for. Overall, a good set of numbers right from the second quarter onwards. The market has been fairly upbeat on Polycab. There's always a Polycab versus Havel debate that goes in this space, and for now it looks like Polycab appears to be winning with another set of very strong numbers. Yes, Santo. In fact, Havels also reported a healthy set of numbers. जो Havels के results आए, अगर हम बात करें तो जो केबल और ECD सेगमेंट्स हैं यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी. बेसिकली जो वायर्स कंपनी है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी है, पॉलीकैब, हैवेल्स, इनको एक बेनिफिट, एक टेलविंड ज़रूर मिला क्योंकि लास्ट क्वार्टर से ही आपको जो कमोडिटी प्राइस है, खास करके कॉपर, जो इनका एक बड़ा रॉ मटेरियल है, वो गिरता हुआ दिखाई पड़ा. तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल ईज हो जाता है, जो प्राइसिंग प्रेशर है वो ईज हो जाता है. प्लस आपको ये फेस्टिव सीजन क्वार्टर था तो ऐसे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स के सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं. अगर हम लाइटिंग सेगमेंट की बात करें और लॉयड्स की बात करें तो ये एक डार्क स्पॉट था हैवेल्स के लिए क्योंकि दोनों का ही प्रदर्शन वीक रहा. इनफैक्ट लॉयड का जो लॉस है वो 60 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल आपको 42 करोड़ के आसपास दिखाई दिया.
ऑब्वियसली जो एयर कंडीशनिंग डिमांड है और जो एयर कंडीशनर सेगमेंट है वो अभी अच्छी तरीके से रिवाइव नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा है, और शायद इसीलिए आपको वोल्टास जैसे स्टॉक्स में भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। पर एक बेसिक रीड थ्रू सैंटो ये है कि डिमांड अच्छी रही है Q3 में, परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं। हैवेल्स, पॉलीकैब, ये दो बड़े कंपनीज ने रिजल्ट जो दिए वो अच्छे दिए हैं और इंप्रूवमेंट की भी बात की है। ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस कॉल होगा एनालिस्ट का जहां आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, तो देखा जाएगा ये आउटलुक क्या है डिमांड का। लेकिन हाल फिलहाल जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी स्टेबल आए हैवेल्स और पॉलीकैब के लिए। Well, your stock, Yatin. हैवेल्स ही था मेरा स्टॉक, मैंने वो डिस्कस कर लिया, अभी आपकी बारी है। Okay, so Asian Paints, the next stock on our watch list. Weak set of numbers there, below market expectations largely, and according to CNBC poll, the net profit was expected at around 1145 crores. It has come in at 1097. Consolidated revenue at 8,608 crores was again lower than 9,510 crore. According to the CNBC poll, and both growth in the decorative paint segment was flattish compared to healthy growth seen both sequentially and year on year during the quarter just gone by. Yatin, clearly a case of high valuations coming to bite Asian Paints at this stage, because despite the tough operating environment, the company has managed to put up a decent show. But given that the prices have run up a fair bit, I think that's what the market seems to be worried about at this point. And only probably two reasons why I think एक benefit of doubt मिलना चाहिए एशियन पेंट को सैंटो। सबसे पहले तो रेनफॉल काफ़ी इरेटिक थी थ्रू द कंट्री, और कंपनी ने एक्नॉलेज किया है कि जो एरेटिक रेनफॉल है और जो मॉनसून क्वार्टर है उसकी वजह से डिमांड में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया। लेकिन और एक बात जो हमको ध्यान रखनी चाहिए वो है गिरते हुए क्रूड के प्राइसेस। हर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं, कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। शायद इसका फ़ायदा एशियन पेंट को हो, क्योंकि इनका जो की रॉ मटेरियल है, चाहे वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, बेस जो है वो क्रूड ऑयल है। तो जितना क्रूड ऑयल गिरेगा उतना एशियन पेंट का रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरेगा। ऑब्वियसली कंपनी ने बहुत ही कहें तो स्टेप बाय स्टेप प्राइस हाइक्स ली हैं, तो शायद फुल प्राइस हाइक का बेनिफिट लास्ट क्वार्टर में ना बैठा हो, लेकिन एक बेनिफिट डाउट मुझे लगता है सैंटो देना चाहिए, क्योंकि मॉनसून क्वार्टर था और अब क्रूड गिर भी रहा है, तो आगे जाके इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। Well, yes, Yatin, but then again you have competitive intensity which is increasing. Now you have fairly formidable players like Grasim and JSW Steel also in the fray, which is something that the market was anyway worried about for the last couple of quarters. So I would still say that given that valuations aren't exactly cheap at this point in time, and you're only seeing competition, increasing competition out there, it looks like in the near term at least buyers will be a little worried of Asian Paints. करेक्ट। एंड जो दूसरे स्टॉक्स है मेरे रेडार पे, ऑब्वियसली एशियन पेंट्स हमने डिस्कस किया, लेकिन अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी रेडार पे रहने चाहिए। अशोक लेलैंड ऑब्वियसली इन्होंने अदानी के साथ एक MOU किया जहां वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स डेवलप करेंगे। और आज एक न्यूज़ रिपोर्ट ये आई CNBC आवाज़ पे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडी देती है, वो शायद बजट में एक्सटेंड की जाए। तो शायद आपको टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स फोकस पे रखने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फिर से एक बार सरकार की कोई PLI स्कीम या किसी प्रकार की एडिशनल इंसेंटिव आने की उम्मीद इस बजट में की जा सकती है। ऑब्वियसली सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, बजट ही तय करेगा कि कैसे इन स्टॉक्स को या इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को सर्विस किया जाए। बट ये दो स्टॉक्स सैंटोस पर्टिकुलरली रेडार पे रहेंगे, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। Well, Exide is the last stock on our watch list this afternoon. Good run up in prices there. Now the company will be reporting its third quarter numbers shortly. Now Sher Khan and JP Morgan have been among the brokerages which are bullish on Exide. The second quarter numbers were a mixed bag, but one heartening point was that raw material prices, the decline in raw material prices clearly aided margin, and that trend is expected to continue in this quarter also. That's one of the factors that's been driving up the stock. According to Sher Khan, the company should benefit from robust demand in both its automotive segment as well as the industrial segment, and it has also said that at current levels, at current stock prices, the valuations aren't too demanding. They're just about 11% 1 year forward, and EV to EBITDA multiple is 6.8. Besides, Exide has commenced work at its 12 gigawatt lithium ion cell, and it's expected to become operational fully operational by FY26. So these are some of the other triggers, considering that
the world is shifting now towards electrical vehicles. Lithium ion cells is clearly what will be in demand going forward. And I think हमारा राजा बैटरीज ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट की है कि वो लिथियम की टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे और वहाँ भी एक केपेक्स की अनाउंसमेंट हुई है. मार्केट हमेशा एक्साइटेड रहा है नई टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि बैटरी का बिजनेस अगर हम कहें सैंटो तो पहले लेड एसिड बैटरीज प्राइमरीली ये कंपनीज बनाती हैं और रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी हेल्दी थी. इंडस्ट्रियल बैटरी की भी डिमांड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे केपेक्स साइकिल मूव होता है वैसे वैसे आपको इंडस्ट्रियल बैटरीज का सेगमेंट भी रिवाइव होते हुए दिखाई देता है. तो शायद एक्साइड और हमारा राजा बैटरीज ये प्लेज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी में, इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है ऑटो इंडस्ट्री में उसको रिलेटेड. बट ऑब्वियसली केपेक्स अभी भी करना बाकी है, टेक्नोलॉजी अभी प्रूव करना बाकी है, और जिस हिसाब से पहले कमोडिटी के भाव बढ़े, कॉस्ट बढ़ी, मार्जिन प्रेशर आया, अब ये भी देखना होगा सैंटो के लेड के प्राइसेस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस, लिथियम के प्राइसेस और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स इनको कौन से मिलते हैं. And Exide has been one stock which is really not gone anywhere for a very long time. Yes. And there's a lot of skepticism whether this time it can break that jinx. And even then the climb has been pretty gradual. Right. Well, and with that, it's a wrap on this edition of Closing Bell. Thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And we'll be back with you again at 9 a.m. tomorrow morning. And in the meantime, for all news, views, analysis, stay logged on to moneycontrol.com. First February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Moneycontrol. Log on to www.moneycontrol.com for more.